अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज एएस के प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 50 के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारा 50th वेबिनार है। तकरीबन 4.5 साल हमें हो चुके हैं इसको स्टार्ट किए हुए। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं और बहुत ही लर्नेड स्पीकर्स के साथ, नॉट ओनली लर्नेड स्पीकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। आज का टॉपिक था क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। व्हाई क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैटर्स। क्रॉस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल के हवाले से खास तौर पे, इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स का जमाना है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट refers to the process of understanding, addressing and resolving disagreements that arise between individuals or groups from different cultural backgrounds। एक बात ये फैक्ट है कि जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो डिफरेंसेस आते हैं। जैसे हम कहते हैं मुश्किलात तो आती हैं, तो डिफरेंसेस भी आते हैं। उसको मैनेज कैसे किया जाए, क्यों जरूरी है, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट को क्यों मैटर करती है, इसलिए कि इफेक्टिव क्रॉस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा की रोल प्ले करती है वर्क प्लेसेस के दरमियान। और आज हमारे दो बहुत लर्निड स्पीकर्स हमारे साथ हैं। पहले स्पीकर के मैं तारुफ कराता हूँ, तारिक हुसैन खान साहब, ग्रुप CHRO ट्रीट कॉर्पोरेशन। Tariq Hussain Khan Saab is the Group Chief Human Resource Officer at Treat Corporation Limited, with 25 years of experience in senior HR roles at prominent organizations, both domestically and internationally. His career includes positions at Beacon House Group, Fatma Group of Companies, Indus Motors, Toyota Pakistan, Pepsi, Allied Bank, and Siemens Pakistan. Tariq Saab is passionate about employee well-being and excels in implementing HR policies and procedures that enhance service delivery. He holds a master's in public administration with a focus on human resource management, and is dedicated to leading effective HR strategies that support employee development at Trade Corporation. Tariq Saab, welcome to our webinar. Thank you so much, आपने टाइम निकाला और इस वेबिनार में हमें टाइम दिया। Thank you very much for calling me. Thank you very much. और आज के सेकंड हमारे स्पीकर हैं मोहम्मद अली खान साहब। मोहम्मद अली खान साहब इज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमीद लतीफ हॉस्पिटल। Mohammad Ali Khan Saab, the head of human resource at Hamid Latif Hospital, a dynamic leader with over 20 years of rich experience across diverse industries, including telecommunication, education, healthcare, and hospitals. Renowned for his expertise in change management, organizational transformation, and digitization. Mohammad Ali Saab is a thorough professional recognized and respected for his impactful contribution in the field of human resource. His deep understanding of industry dynamics enables him to foster a culture of innovation and resilience, empowering teams to navigate challenges and leverage opportunities in a ever-evolving landscape. Mohammad Ali Khan Sahab, sir, thank you so much for joining us. आपको welcome to the webinar. और आज एक सर एक लैंडमार्क वेबिनार है, इसलिए कि हमें कोई 4.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। 50वां हमारे जो है वो वेबिनार है, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर टॉपिक पे आते हैं, क्रॉस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाई क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैटर्स। तारिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अल्फाज में हमारी ऑडियंस को बताएं, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं ज्यादातर, कि यंग प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल हैं, कि क्यों ये होता क्या है, व्हाट इज दिस और व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। So overall, first of all, thank you very much, Ji. And then, Khurram, it's a pleasure, and it's a very good initiative that you've taken in terms of webinars, because that will enable all of us to have a mutual learning, on this topic. So just to take it forward now, अगर मैं corporate की बात करूँ, so आज, all over the place, if I look at it, conflict has become a buzzword altogether, while conflict itself is to solve any problems. Conflict is not called as an unhealthy exercise, rather a healthy exercise, because जब मैं conflicts की बात करता हूँ in a corporate environment, so what is a conflict? Let's first understand that. So in a business environment, what happens is that we are all coming in from different cultures, different horizons. जब हम किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, हम किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, हम डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, और हम कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ. What happens is that when we coordinate with each other, there are thinking which is different from each other, and there is no harm in having a different school of thought. So conflict arises when we make it personal. आप समझे? So a problem is never a problem in an organization until it becomes personal as a conflict.
Now, if I take a very pertinent example of an organization, what happens is in an organization कि हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की. सो जब हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल इज समथिंग which is very common and it arises due to different subjects and matters altogether. Now, in terms of management, जितना जी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताऊं, it's been 25 years in HR. So when I look at this, there are three elements through which a conflict management can be addressed altogether, or typically in a cross cultural environment. One of the major things that you can do is research and awareness altogether on a subject matter. So what happens is कि बेसिकली हम एक आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं between two different departments, between two different people, between two different areas, between two different organizations within a typical setup. What happens is we go into an argument and a conflict. Now, ये conflict बनता कब है? जब we do not have the idea about the subject in detail. So, first of all, to avoid conflicts, awareness is a must factor. दूसरी चीज जो जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई बिकॉज मेरे साथ हमारे सारे कॉलीग्स हैं यहाँ पे हु आर HR people. So we must avoid assumptions during a discussion. Jab when we assume things in our mind and we think that this is right, then conflict starts to arise between two parties altogether. So assumption is a killer altogether. And foster cultural harmony, which is very very. और मैं आपको बताऊं, हर ऑर्गेनाइजेशन आज में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, और हम यहाँ पे रीजनल या कंट्री डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे, हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होती है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो एग्जांपल इज देयर इज अ डिपार्टमेंट व्हिच इज कॉल्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है जी. एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मनी मैटर्स. Now, all our operational people want things to be fast in terms of payments, in terms of, they don't want to give credits and all those things which happens. Now, when this culture, which is absolutely different in a finance department from a department which is operations, there starts to become an argument and then it converts into a conflict. So what happens is कि एक डिपार्टमेंट है जहां पे 80% 90% लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पे काफी लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं. ठीक है जी. तो इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना कि देयर वुड बी अ काइंड ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन when becomes a conflict, and then when it becomes personal, the best thing to manage is to bring in harmony in discussion. And to bring in harmony in discussion, personal matters should never be brought into an official corporate area. So that's very very important. एक चीज जो मैं कहता हूं ना, की to the entire conflict management regime is communication. And the more effective we are in communication, the better we are in conflict management altogether. And practically ये जो अल्फाज का चुनाव है, यूज ऑफ क्लियर लैंग्वेज, इट्स की. मैं आपको बताऊं, और ये जो यूज ऑफ क्लियर लैंग्वेज है ना जी, ये मैंने खुद अपने आप को बड़ा कॉन्शियसली टोन किया है. बिकॉज नॉर्मली हम अब ये जो हम क्रॉस कल्चरल की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम साउथ एशियन लोग हैं ना जी, so we are very used to getting into a thing where we use a lot of jargons in our conversations, and we want to impress other person through those jargons. So when we do that, what happens is that overall this converts into a conflict actually. So use of clear language is one of the keys to corporate success altogether, and that's what I've seen.
अच्छा, ये एक चीज है जिसको मैं कहता हूँ प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। और ये जो एक्टिव लिसनिंग है ना, ये लिसनिंग नहीं है। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई वेंट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, and there they demonstrated how an active listening is done, and it was very amazing for me, because till that date what I thought was listening was active listening, but when we went into an active listening practice, what happened was that it means that somebody is talking, your ears should be in that platform where you must try to understand the point of view of that party, that gentleman, that department. Once you do the active listening, 80% of the thing will be understood by you, and then you will have a positive kind of a response altogether. The third thing which is very important जी is relationships, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम घर में relationships की बात करते हैं, एक्चुअली अगर मैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बात करूं, सो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि देर आर सर्टेन 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट्स जिनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप्स है आपस में। देर इज वन डिपार्टमेंट जिनके साथ बिल्कुल अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, देर इज अ डिफिकल्टी बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर। So, it's all about building rapport, So if uniformly we actually ensure that we build rapport with all the concerned stakeholders, the conflict is resolved in a manner which is like a corporate manner rather than a fight altogether. अच्छी बात यह कि ये जो पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी है ना, ये जी हम पढ़ते तो हैं, एंड वी अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑल टुगेदर, लेकिन वी नेवर प्रैक्टिस दैट। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, पेशेंस इज अ की टूवर्ड्स सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स even at a country level, even at a country level. So I'm not even talking on a corporate perspective. And when we talk about adaptability is that you go into their shoes and you understand the problem and come to your own shoes. What will happen? You will address a conflict in a manner which is rightly so. So it's very, very interesting. And these things are being practiced. और मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि at this point of time अगर आप देखें तो organizations are struggling, all organizations are struggling with a talent war altogether. हम यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान में तो जी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और हमारे पास तो बहुत लोग बेरोजगार हैं। तो what is happening? Why are people not getting jobs? Actually, the issue is we do not have the right people for the job. That's the issue actually, and that is why employers are right now struggling to find the right talent altogether. और जो right talent है is all based on 3 qualities. अगर आप competency map को देखें ना, on the best of the universities across the world, तो वो 3 बातें करती है। right fit की बात करती है, सेकंड एडेप्टेबिलिटी की बात करती है, और थर्ड बड़ी इंटरेस्टिंगली बात करती है, वो कहती है ऑनेस्टी इन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी प्रोफेशनल को यू नो it makes it achieving altogether. So very interestingly, one of the interesting things, encourage open dialogue जो है ना, ये एक ऐसी बात है जो शायद हम सभी थोड़े परेशान होते हैं to do it. We do not want to encourage an open dialogue. Always we keep a kind of platform on our face कि हम इतने open dialogue ना करें. We keep it very, very formal altogether. But I can tell you from my experience, if you have an open dialogue with people, you always achieve results. So that's what I feel Thank you like. so much. But this is what my 10 cents would be on conflict management.
थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा, बिल्कुल इट्स नॉट अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर ओनली। वॉर जब होती है तो नुकसान दोनों का होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, बट ये नहीं हो सकता आगे। मोहम्मद अली खान साहब, सर आपकी तरफ आते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंगली आप हॉस्पिटल को एक चला रहे हैं। तो हॉस्पिटल और जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो नॉन स्टॉप 24/7 365 डेज चलते हैं। इस वहां मैंने कुछ अर्सा अपनी जिंदगी का एक हॉस्पिटल में कुछ काम भी किया है। तो वहां के तो मसले डिफरेंट होते हैं वहां के कॉन्फ्लिक्ट्स और वो चीजें Absolutely. बहुत डिफरेंट होती हैं। सर आप आपसे सुनना चाहेंगे, हमारी Thank you very ऑडियंस। much. सबसे पहले तो very well or beautifully basically orchestrated by Tariq Hussain Saab about conflict and its resolution. So as Tariq Saab has rightly pointed out, webinars are basically a two-way learning process where we learn from both the people who are here with us and from our fellow panelists. Conflict, especially cross-cultural conflict. So I have worked with diverse teams from diverse backgrounds and from diverse, cultures. When it comes to hospital, it's altogether a very diversified organization. People are coming in from various, religions, ethnicity, backgrounds, and beliefs. It's very important to realize why this cross-cultural conflict arise. Of course, very rightly pointed out by Tariq Saab, uh, we take many things for actually granted and we don't look into the details. So for us, it can be a problem of ego, जो कि Tariq Saab ने very rightly pointed out. At times we are not ready to listen to the other person's perspective, especially basically it actually uh, comes whenever somebody from different background is entering into your organization. मैं organizational perspective से थोड़ा सा आपको बताऊं. In my previous organization, we had people working from India, from Philippines, and from various backgrounds. And I tell you that it took us so many years to understand this thing. Okay, we need to be very careful while devising our policies, and especially while inducting these people here. हमारा वही हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के, जिस तरह इन्होंने बात की तारिक साहब ने, we totally focus on our things ourselves and not the different communities at large. एक छोटी सी चीज थी. One of the Indian doctors, he came to me. He said, "Yeah, I am a bit dejected." He was working as a consultant. He was a very qualified consultant from the UK. So he said, "I'm very dejected." We said, "What happened?" "Your policy don't cover the religious days which I, celebrate." And it was a very valid point. No doubt he was living here in Karachi for a long period of time, and then he moved to Lahore with his family, and he was here in Pakistan since long. But yes, he saw that we were celebrating our religious holidays, um, and when it comes to their religious holidays, there was no policy. And at that time, we realized that we need to revisit our policies and tailor them according to the different cultures and religions which are working with our team. So yes, we did, and we did it thoroughly, not just for his you know his grievance, to settle his grievance, or for to settle that conflict or issue which may have arisen to a very large level, but to facilitate all those who are working from different countries here in Pakistan. So at times you cannot ascertain how big a problem can become, and it's very important that you have to communicate
with your staff, you have to get feedback. You have to get feedback, and feedback in a sense that they don't feel like, being discriminated, especially when it's from another group or different cultural background. Uh, if you go into the statistics globally, uh, according to a study by the CPP Global Human Capital Report, workplace conflicts leads to approximately $359 billion annually in lost productivity in the US alone, with 28% of employees avoiding co-workers due to unresolved problems. So it actually affects your business overall. If you are not looking into these things, it will definitely affect your business. The bottom line. So the remedies which we need to do, of course, it will start from the time you are going to induct an expat, a foreigner, or a person from different religion or background. So you need to have uh, good training programs, which are which would help the cultural awareness among groups. Then, of course, effective communication, which Tariq Saab has rightly pointed out. Uh, your words matter a lot. The point Tariq Saab said, that jargons, yes, we do it very oftenly, and at times we pass such a comment which might not be, received in a good sense from the receiving end. So it's very important that we need to be very clear in our communication, set the goals right. We should have a formal conflict resolution mechanisms in place. So whoever has a problem, they need to exactly know where they need to go, and discuss it, and where they can feel comfortable and there listen. The active listening, which Tariq Saab has rightly pointed out. Uh, it's very important to be empathetic. Very rightly you pointed out that you need to put yourself in the other party's shoes and see, if you are from a different culture or background, how will you feel if something is discriminant and not good for different cultures. So listening adaptability is very important. We should have, safe spaces for dialogues. We should not, discuss these things openly in, uh, areas where they should not be discussed. So silent rooms and places in your organizations where you can always sit and, discuss these issues. So the other person will always feel comfortable while discussing. Otherwise, they will never ever speak up their issues, but the grievance will definitely uh, be increasing in them, and they can always burst out at any time, which will result in a very large conflict, and which can is difficult to manage. अच्छा, इधर ये भी होता है कि we fail to, we are hesitant to get external expertise. हम कहते हैं कि यार ये ना हो कि किसी को पता चल जाए, ये हो जाए, फ्ला हो जाए. इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वॉल्व अ कंसल्टेंट. यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सो इफ यू गो टू कराची या सिंध, देर इज लॉट ऑफ कल्चरल इश्यूज. वहाँ पे बहुत से कल्चर से रिजाइड करते हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं. एंड यस, उसमें आपको यू ऑलवेज सी कि दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ प्रॉपरली हैंडलिंग दो सिचुएशंस, कि वो पीपल दे डोंट स्टे, दे गो, दे मूव बैक टू देयर कंट्रीज, और इवन their provinces, if I be more specific.
हम लोग यहाँ पे ये जब छोड़ देंगे ना कहना कि जी ये पठान है जी, ये सिंधी है जी, ये पंजाबी है जी, it will make a lot of difference. We all are Pakistanis and we are all are Muslims, ठीक है ना? ऐसे So ऐसे it's बहुत सा हमारा मसला ना वहीं पे हल हो जाएगा कि when we respect other person's point of view and we accept them as they are, ठीक है जी? आप हर जगह पे हमें मिसाल दी जाती है that 5 fingers, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। but still we have to get everybody सर along. So for that reason, it's very important. So थैंक यू सो मच। thank you very जी much. बिल्कुल, जी जी These were थैंक my जी। और थैंक यू सो मच सर। रिपोर्ट कहती है कि 60% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन मल्टीनेशनल टीम्स आर एट्रीब्यूटेड टू कल्चर डिफरेंसेस। और मैंने खुद पाकिस्तान से कोई एक डेकेड पाकिस्तान से बाहर रहने का टाइम मिला, तो एक जमाना था कि सेल्स टीम एक खास कल्चर के थे, अरब थे, फाइनेंस सारा पाकिस्तानियों का था। उनको शिकायत थी कि हमारे ऑर्डर्स अप्रूव नहीं होते, हमारे क्रेडिट लिमिट्स एडजस्ट नहीं होती। और जब चेक किया तो वाकई होता था कि जो बंच होता था कि डाटा के इंटरप्रेटर किसी को साइड पे करता था और ग्रुप्स बन जाते हैं। ये तो इंडिविजुअल्स को हैंडल करना तो फिर एक आसान होता है, बट जब ग्रुप्स बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज को सॉल्व कर ले, 20% प्रोडक्टिविटी बूस्ट तो रिकॉर्डेड है कि जो जिनमें ये इस चीज को मैनेजमेंट हो जाए तो 20% बूस्ट आना ही है। सर एक रिपोर्ट हार्वर्ड बिजनेस की रिपोर्ट है कि जो प्रोजेक्ट्स जब ड्रैग होते हैं उसके सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कल्चर क्रॉस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फलानी टीम में ग्रुप्स बन गए। पाकिस्तान में इवन मैं खुद टेक्सटाइल में रह चुका हूँ एक जमाने में, तो टेक्सटाइल में बहुत था इस एरिया की टीम, और सबसे ज्यादा सिंध में मैंने ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी उसमें काम किया। इस हद तक था कि इस गांव के लोग उस गांव में नहीं काम कर सकते, वहां के लोग वहां काम नहीं कर सकते, और चीजें 20-20 दिन जो है रिग्स बंद पड़े रहते थे कि उसने उनको नहीं आने दे रहे, वो उनको नहीं आने दे रहे। आगे चलते हैं सर। तारा साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, प्रॉब्लम ये आती है कि कॉन्फ्लिक्ट, जैसे भी मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया जाए कि अवॉइड किया जाए, और सबसे बड़ी जो चीज है जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आ जाते हैं वहां डेडलॉक आ जाता है और सफर ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसके ऊपर सर। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, ये आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं कि अवॉइडेंस। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़े सालों में समझ आई हमें भी कि यार ये अवॉइडेंस जो है ना, ये एक टाइम तक तो आप कर सकते हैं, एंड यू ट्राई टू डू इट सो दैट नहीं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, नॉट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन मैं आपको बताऊं विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब कॉन्फ्लिक्ट आए तो हेड ऑन उसको लें और उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा डिलेमा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड रूम का होता है ना, वो एलिफेंट इन द रूम होता है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम उसको रिजॉल्व नहीं करते, अवॉइड करते हैं, और आगे जाके वो कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा नुकसान देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। So, I was working for a very large, company which used to manufacture, FMCG products, and it's an international, very big organization. जी. And इसमें oil and gas भी है जी. When we're talking about, biscuits, you're talking about oil, and it's a very huge organization. इंटरेस्टिंगली, क्योंकि उसमें क्रॉस कल्चर लोग थे, उसमें अरब्स भी थे, उसमें साउथ एशियंस भी थे, उसमें चाइनीज भी काम करते थे। अब इंटरेस्टिंगली, देयर वाज वन जेंटलमैन हु वाज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग। And now we are talking about somebody who is bringing 86% of the revenues of that organization. So now the thing is, we talk about either we address the values or we address the revenue. So very interestingly, so when you go into that kind of a conflict, interestingly, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हेड ऑन लेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हम एक फीडबैक देंगे, और इस पे अगर हमारा नुकसान भी होता है, वी आर ओके बट वी विल सॉल्व इट। मैं आपको बताऊं इसका जो आउटपुट था वो कितना अच्छा था, कि नॉट ओनली दैट पर्सन स्टार्टेड बिहेविंग ऑन टू द वैल्यूज प्लेटफॉर्म, but after that he worked for that organization for good 10 years. you know so
avoidance is absolutely not recommended. Thank you. आप म्यूट पे हैं मेरा ख्याल है। जी मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर। सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज आता है, और खासतौर पे एज एंटरप्रेन्योर और एज ए लाइक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। क्या मैयर, खासतौर पे मींस हम लोग जैसे आप, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस का है, बट नाउ आई एम रनिंग एन एचआर कंपनी। तो हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। प्रोडक्शन में ज्यादा होता है, जैसे आप खासतौर पे आप तो हैंड्स ऑन हर वक्त, और इवन तो प्रोडक्टिविटी क्या क्या मैयर्स रखे जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाए। बहुत दफा ऐसा होता है, पता चलता है बाद में कि जी इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी कि वो दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, ये दो डिवीजन आपस में बात नहीं कर रहे थे। किसी का पेशेंट लेट हो रहा था, किसी को जो है, मैंने तो ये चीज खुद देखी हुई है, कंसल्टेंट्स को था कि जी एक ही डिसिप्लिन के लाइक 2 पल्मोनोलॉजिस्ट 3 पल्मोनोलॉजिस्ट एक हॉस्पिटल में है, और उनको था कि जी आप रेफरेंस रेफरेंस गलत होता है। तो क्या ऐसा मेजर किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स पहले ही नजर आ जाए और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना की जाए, अफेक्ट ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है जी, और ये बिल्कुल इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपके सिस्टम्स हैं। दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे नीड टू बी वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड, कि आपको हर चीज़ का इल्म हो कि जी किस तरह से चीज़ें होंगी या की जाएंगी। लो प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसके ऊपर बेसिकली दिस इज मोर लाइक एंगेजमेंट टू वर्क। अब अगर आपका आप यू आर नॉट सो मच सो दैट एंगेज्ड इन योर वर्क, तो आप इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते वट एवर यू आर डूइंग, एंड दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर प्रोडक्टिविटी। अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के अंदर इस तरह का, वी आर अ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है हमारे आगे वी आर नॉट डीलिंग विद प्रोडक्ट्स, बट वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, एंड पेशेंट्स इज बेसिकली द ह्यूमन लाइफ, जहाँ पे चांसेस ऑफ एरर्स आपके पास जीरो रह जाते हैं। अब इतनी टेंस एनवायरनमेंट में और ये सारी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी उस वक्त कम होती है जब यू आर नॉट लिसनिंग टू योर स्टाफ व्हाट दे नीड टू कन्वे, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके फॉर्मल चैनल्स नहीं हैं जिसके थ्रू कोई फीडबैक आपके पास आ सके, सो द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है। अब इसके लिए we introduced certain policies in our organization, which includes a whistleblowing policy, which includes non-discrimination policy, which includes you know uh, top-down, bottom-up communication policy. So all these policy really helped us, and it's a very common thing which we are doing here is getting these anonymous feedbacks surveys from various specific groups. For example, हमारे पास project critical area होता है हर जगह पे जी, जिस तरह तारिक साहब ने भी बताया. So the project critical area when it comes to healthcare is number one, the doctors, number two, the nursing staff, and number three is the paramedical staff, who are closely associated with the consultants and assisting them in doing various procedures. अब interestingly, जो nursing staff है, I tell you the statistics, you will be amazed to know that according to the survey of 2024, 1,20,000 nurses are registered with the PNMC, the registration body here in Pakistan, which is a very small number as compared to the number of beds across hospitals in various provinces in Pakistan. So it's a huge gap actually, and इसके अंदर आपने काम करना है, you have to provide state of the art services to your patient. अब हमारे पास ये चैलेंज आता है, at times people are not performing due to more workloads. So
they are not getting for formal time offs for themselves. It's a big challenge. और उसमें यही है कि हम चूंकि सर्विस करते रहते हैं, हम उनके साथ बात करते रहते हैं. Listening is very important. Active listening is very important. I tell you कि 70-80% of the conflict or the problem is resolved if you are a good listener and you listen to the problem. Everybody has a life and उनके साथ एक family connected होती है. हमारे पास आते हैं लोग who are demoralized कि जी अब घर पे भी हमसे नहीं हो पा रहा, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा. So yes, we try to help them out. Whatever we The famous sandbag we can. approach. Yeah, the Absolutely. famous sandbag approach. क्या you listen, हाँ, निकालने दे और चीजें आधी चीजें वैसे ही हल हो हाँ जाती जी, हैं. बिल्कुल. और आई टेल यू कि शायद हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए सब कुछ नहीं कर पाते, बट उनका एक सिटिंग या 2 सिटिंग के बाद उनका मोरल बेहतर हो जाता बेहतर है हो जाता एंड दे स्टार्टेड वर्किंग लाइक एनीथिंग. So, है. जिस तरह now it's basically the era of care and growth rather than command and authority. Tariq Saab would second me. So So the true, more yeah. you care for your Yeah. employees, they will produce lucrative results which you cannot Yes. even imagine. So Especially after the entrance of Gen Z, you have to do this. There is no other way. जी So, बिल्कुल. sir, Tare sir, how जी. important meetings are for this? Because I remember, मैंने मेरी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ था 97 में, 28 साल हो गए. तो हमारे और सारे यंग मैनेजर्स थे, हमारा इवन जो सीईओ था वो भी यंग था. वो मीटिंग होती थी हमारी वीकली. वो कहते उस मीटिंग में मारो एक दूसरे को, मुक्के मारो, जो भी करो करना है कर लो. इस मीटिंग रूम से बाहर कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाना चाहिए. जो कॉन्फ्लिक्ट है उस मीटिंग में, और बड़ा फायदा होता था. और बड़ी, अगर उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स होती है तो देखते बड़ी वाहियात से की मीटिंग होती थी करने के लिए. फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्टिल मैं उसकी विजडम को मानूंगा. इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया गया कि जी लैंग्वेज क्या यूज होनी है, मीटिंग्स की लैंग्वेज जो है ना बड़े तो क्या कितनी इंपॉर्टेंट है मीटिंग्स, एक रेगुलर चीजें करना उसके लिए. सो वो थैंक यू वेरी मच. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं कि अभी अली ने जिक्र किया एंड सो ट्रू कि अगर आप देखें सो अली की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है ह्यूमन बीइंग से. और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम तो मशीन से डील करते हैं, ये तो ह्यूमन लाइफ्स को डील करते हैं. उसमें कितना क्रिटिकल है कि एक कॉन्फ्लिक्ट लोगों की जान ले सकती है अगर डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो. तो वो जो आपका सवाल है मीटिंग्स, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं आपको बताऊं, मैंने लाइव स्टार्ट की फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग कंजर्वेटिव जर्मन ऑर्गेनाइजेशन सीमेंस पाकिस्तान से. एंड वहां पे ये जैसे आपने कहा कि जो मीटिंग्स हैं ऑल टुगेदर वाज लाइक अ वॉर जोन. अच्छा, और वो जो वॉर जोन है वो इस किस्म का वॉर जोन था कि ऑपरेशंस का जो हेड है वो आता ही इसीलिए था ताकि वो जान से मार दे बेसिकली प्रोक्योरमेंट वाले को कि मेरा काम नहीं हुआ और रिस्पॉन्सिबल तुम हो. और प्रोक्योरमेंट वाला कह रहा था कि क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं हुई तो रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस है. और फाइनेंस कहता था कि अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो रही तो मैं कैसे डिलीवर करूं एट द राइट टाइम, किलिंग द ह्यूमन रिसोर्स. सो व्हाट आई कैन टेल यू वाज दैट रूम व्हाट लाइक अ वॉर जोन. वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज at that point a very young student of HR, so I was learning a bit. सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में थी. एंड द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज बिलीव्स इन अ कंस्ट्रक्टिव मीटिंग. सो वहां पे वो जो कंस्ट्रक्टिव मीटिंग है वो इस तरीके से होती है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कि एवरीबडी ब्रिंग्स देयर पॉइंट्स एंड बिहेव्स इन दैट मीटिंग. दे डू नॉट गेट इनटू अ बैशिंग मोड, बट उसमें वो स्टार्ट करते हैं विद अ फिश बोन डायग्राम एंड वो एंड करते हैं विद अ रेजोल्यूशन एक्चुअली व्हेन दे गो आउट ऑफ दैट रूम. एंड द होल एनवायरमेंट इज नॉन पर्सनल. द होल एनवायरमेंट is not rude. The whole environment, they all behave in a manner which is a very humanly manner. मैं आपको बताऊं, मीटिंग्स, जब हम मीटिंग्स की बात करें तो मीटिंग्स भी बहुत कंस्ट्रक्टिव हो सकती है और उससे आपको मैं बताऊं 80% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम.
But this has to be ascertained by the leader of that meeting, which is the CEO. The CEO sets the tone, and the CEO ensures कि what will be the environment of that meeting. But मैं आपको बताऊं important क्या है, cultural norm ये है कि we should all behave in meeting. That is something which ensures conflict management actually. बिल्कुल जी, you are absolutely right. We always had these meetings in Telenor, Pakistan. I had served for a while in Telenor, Pakistan. So it was a conference room, and every other department was there, and it was an open forum. Anybody can raise anything, and but you are absolutely right that there needs to be somebody in charge who needs to uh, ensure that certain boundaries are not crossed, and people come to some sort of a resolution rather than एक दूसरे का गिरेबान पकड़ ले. So जी फरम. सर चले बड़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अंदाजा हुआ कि चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. सर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग फ्लो एक बनाया जाता था एचआर के हवाले से. हम चीजों की बात करते हैं कि इशू फ्रेम करें, उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करें. थोड़ा सा अगर गाइड कर सके उसमें कि हम इसलिए खासतौर पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको गाइडेंस मिल जाएगी कि वो मतलब हम बातें तो करते हैं पर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉलो भी करती है. तो जब लाइव सुनेंगे ना तो होगा कि वो कैसे उस चीज को लेके चला जाए. So overall देखिए मैं आपको बताऊं, there is a specific policy which is framed through a system, and that policy governs the conflict management in an organization. अच्छा, उस पॉलिसी का जो स्टार्ट पॉइंट है जी, वो स्टार्ट पॉइंट ये है कि द इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. सो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते बट ग्रीवेंस कहते हैं. इनिशिएशन ऑफ एन एरिया ऑफ कंसर्न. फर्स्ट वो इनिशिएशन ऑफ एन एरिया ऑफ कंसर्न होता है, and it is first raised to your concerned line manager. Acha, once you raise that to a concerned line manager, that line manager actually is responsible to address it in a specific level of time. हमारे यहाँ एक डैशबोर्ड बना हुआ है जी. I instituted an automated system where a dashboard is there where all conflicts, जिसको हम conflict नहीं कहते, हम area of concern कहते हैं, वो area of concern वो it is written, and then it is sent to the concerned people automatically, and there are timelines and stakeholders attached, and each one has to have a resolve in a humanly manner in a specific time. जैसे ही आप वो इनिशिएट होता है, इनिशिएट होने के बाद फिर आपका वो आ जाता है जहां प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग का मतलब मीटिंग, either you address it through meeting, either you address it through a conference call, either you address it through an email, but you have to address this in a manner which actually ensures कि productivity आपकी hamper ना. जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग के बाद आप रिजॉल्व पे आते हैं. रिजॉल्व का मतलब यू हैव टू रिपोर्ट दैट रिजॉल्व इन दैट डैशबोर्ड, एंड वंस दैट रिजॉल्व इज डन तो कंप्लीशन का एक डेट आ जाता है. बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, एवरी डिपार्टमेंट इज एक्चुअली इवेल्युएटेड एंड 15% weightage in their KPI as a chief operating officer is associated with this altogether. और मैं आपको बताऊं, last year there were in total 231 conflicts altogether that were raised, and you can imagine कि उसमें से टाइम पे कोई 60% रिजॉल्व हुई, और इस साल द रिजॉल्व रेट इज 90%. सो कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो थ्रू अ सिस्टम स्टार्ट कर दिया है. You're absolutely right. Same as the case with us, see, we are doing this manually, and we have got a formal policy for grievance handling and settlement, and there are certain forms which needs to be filled in. There are certain levels which where these concerns needs to be addressed first, and then they can always reach HR. And if there is no consensus, then we can always call them. We can have meetings. We can see. We can always refer to our policies so that they're resolved. Yes, it's more or less the same. थैंक यू सो मच. मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आता हूँ. सर
एक बहुत इंपॉर्टेंट वो देखा जाता है कि जब हम मैनेज करने जाते हैं, रिजॉल्व करने जाते हैं, और खास तौर पे जहाँ ग्रुप्स होते हैं, मतलब इंडिविजुअल तो हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान होता है, जहाँ ग्रुप्स होते हैं और इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो जिसके फेवर में अगर डिसीजन, जिसकी मर्जी का डिसीजन नहीं आया, तो वो ये जरूर बोलता है कि जी फेयर नहीं था। तो व्हाट आर द टेक्निक्स वी कैन यूज फॉर नेगोशिएटिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट? एक तो करना, ऑफ कोर्स जो कर रहे हैं उसकी इंटेंशन साफ ही होती है, बट नजर भी आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करें? It all depends upon how your policies are being laid down. They need to be very clear, or they need to be communicated. ये मैं दोबारा दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि many you know conflicts or issues which arise when they are referred to the policy, they are settled actually. So ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस के बाद बनाया हो, ताकि अगर आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और वो रिलेटेड टू पॉलिसी है तो वो उससे एड्रेस हो। बहुत सी जगहों पे जैसा तारिक साहब ने पॉइंट आउट किया, इट्स मोर ईगो देन एन इशू। सो उस जगह पे ऑफ कोर्स एक्टिव लिसनिंग, काउंसलिंग और ये चीज़ें काम आती हैं, एंड यू get the conflict resolved. So ये है जी, मेरे ख्याल में इस तरह से। तरह से एक क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूँ, यूजर का नाम मेंशन नहीं है। वो कह रहे हैं जी, प्लीज डिस्कस आल्सो एचआर, सॉफ्टवेयर हाउस, आईटी, वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बीइंग ऑलवेज ब्लेम एचआर, यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन। सो वो एचआर को ब्लेम करते रहते हैं कि टेक्निकल पर्सन है, दो के एचआर ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व, बट वो एक ब्लेम आता है कि भाई आपको तो टेक्निकल नहीं हो, मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर हाउस में होंगे। आजकल के तौर पे, खास तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस पे एचआर ही नहीं, सॉफ्टवेयर हाउस खुल जाते हैं, ना फाइनेंस होता है ना एचआर होता है, बाद में वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक प्रोफेशनल है सो ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताऊं। और ओवरऑल बिल्कुल, ये तो जी सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं, ये हर जगह है जी। आप हर ऑटो जगह में पे चले जी, जाएं, बिल्कुल। आपको क्या पता जी टेक्निकली। अली फेस हाँ, कहते होंगे कि भाई डॉक्टर्स पूछ लेंगे यार आपको क्या पता अबाउट हाँ, ये गायनोकोलॉजी। हमारी हमारी एक्चुअली स्टैंडर्ड। सो सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इसका जो बहुत सिंपल आंसर है ना जी, वो ये है कि कोलैबोरेशन with the HODs and the concerned vertical heads. अगर आपकी एज एन HR पर्सन बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है विद दोस पीपल, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो आपको इनेबल करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे कुछ नहीं पता था जब मैं ऑटो इंडस्ट्री में आया, और एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज अ जापानीज मॉडल, very different. I always worked in FMCG altogether. Interestingly, they enabled me to understand first how a car is made actually. What is body shop? What is structuring? What is a screw knob? And this was a complete model of Toyota learn yourself altogether that we had to pass as a leader. We didn't have an option altogether. So, मेरी advice है to everybody, even in an IT house, what all of us must do as HR people must firstly try to understand the business. ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं। जब तक हम उनको ये कंफर्ट नहीं देंगे ना अपने कॉलीग्स को प्रैक्टिकली कि हम आपका बिजनेस समझते हैं एंड वी वांट टू पार्टनर इन इट, वो कभी ये चीज बंद नहीं होगी। वो ऑलवेज ये कहेंगे कि बेसिकली यू डोंट अंडरस्टैंड माय रिक्वायरमेंट्स ऑल टुगेदर, बिकॉज आपको तो बिजनेस का पता ही नहीं है। सो आई थिंक यू हैव टू कम एट दैट लेवल एक्चुअली। बिल्कुल जी, जैसे मैं मोहम्मद अली साहब ने सेकंड। कहा, वॉक इन द शूज। हाँ जी जी, हाँ जी, सर सर देखिए, प्लीज हाँ, जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। ही इज़ वेरी राइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जी जो कैथ लैब लगी हुई है, उसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, उसकी जो ट्यूब है, वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल करें तो कितनी देर के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके ऊपर कितना फाइनेंशियल आएगा, और वो किस तरह से चीज़ें चली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली नो द बिजनेस इनसाइड आउट। नंबर टू, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, इट्स इट्स ऑलवेज गुड, जो मैंने एक पॉइंट किया था, टू सीक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट एज वेल। आप किसी एक्सपर्ट को भी अपने साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तारिक साहब ने कहा था, टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। So they are you and they are
on the same frequency, even if you're pointing out to them something otherwise कि इस तरह से नहीं हो सकता या नहीं करना, so they also understand कि यार ये चीज ठीक है. It's only because you have a good understanding with the head of department, they understand what you're saying. But on the other hand, you can always get help from an expert, and you can always involve that expert in, and they can always do the technical, evaluation of any तो matter. फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल ही डिफाइन इसलिए हुआ था कि जो दोनों चीजों को करे. फंक्शनल का खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री में जब आई, और जाहिर बात है इसलिए कि वो नॉर्मल रूटीन सेट की थी, तो फंक्शनल कंसल्टेंट्स आए थे जो दोनों चीजों की नॉलेज चीजें किया करते थे. तो देखिए, एक और चीज मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा. मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं फाइनेंस पर्सन, मैं चार्टर्ड अकाउंट. 2003 में मैंने जब स्विच किया तो मैं टेक्सटाइल में आया. पहला दिन जब मैं, हमारे जो पीके था, तो हमारे जो एमडी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो मुझे लेके नेशनल बैंक की मीटिंग में चले गए. कराची से एक एससीबी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा तुमने तो टेक्सटाइल में काम ही नहीं किया, तुम कैसे टेक्सटाइल मैनेज करोगे? तो मेरे बॉस ने कहा कि जावेद साहब 1 महीने बाद देखिएगा. बात खत्म हो गई. मैं पहली मीटिंग में बैठा और कहा जी धागा टूट गया, खाते में फुटकड़ी आ गई, धागा टूट गया. यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री गदूना मजई में थी, और मैं कुछ 2 दिन गुजारे वहां पे. मैं सुबह 6 बजे से लेके जब खाता होता था, पूरा प्रोसेस जाने को हुआ, और वो 2 से 3 विजिट्स के बाद आई वाज एबल टू सिट एंड टॉक. और 2 दिन जो गुजारे वो ऐसे ही गुजारे जैसे वर्कर गुजारता है. तो अनलेस अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये चीज हमेशा रहेगी, खासतौर पर साहब के जिनका क्वेश्चन है कि आपको नॉलेज लेनी. आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो आपको एचआर में है या फाइनेंस में, जिसमें भी है, वो आपका एक रोल है. यू आर अ बिजनेस पर्सन. हमेशा हमारे सीनियर कहा करते थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ बिजनेस मैनेजर विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स ऑफ एचआर, विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स ऑफ फाइनेंस और व्हाटएवर. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझें कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू मिंगल. आपने इन्वॉल्व होना इस हद तक कि वो आपको अपना पार्ट समझे. जब आप वो आपको पार्ट समझेंगे तो ऑटोमेटिकली. सर आगे चलते हैं, अभी हमारा थोड़ा ही टाइम रह गया. महोदय साहब आपसे आता हूँ. सर, क्या वर्किंग एग्रीमेंट टेम्पलेट्स हेल्प करते हैं इस चीज में? हम उसको दे दें कि जिसमें खासतौर पर टेम्पलेट्स इस सेंस में कि कॉन्फ्लिक्ट का एक टेम्पलेट हो गया, एक टाइम पीरियड फिक्स हो गए, सबको पता हो क्या हो रहा है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमने रेज किया, वो रिव्यू हुआ, उसके बाद क्या हो गया. क्या ये ऐसी चीजें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? क्या इसका फायदा होता है? ग्रीवियंस हैंडलिंग पॉलिसी या जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का आपका मैकेनिज्म है, that needs to be very clear and communicated to everybody who is entering into your organization. That needs to be part of your orientation plan, number 1. ठीक है जी. उससे एक तो ये कि अवेयरनेस बढ़ जाती है. फिर whenever a formal conflict or grievance is reported, so अगर आप उनको 1 2 3 4 steps का नहीं बताएंगे, और ये नहीं बताएंगे that there will be a formal end to what they are doing, तो मेरा ख्याल है सारी एक्सरसाइज का कोई आउटकम नहीं होगा, and it will be vague and nobody will be coming to you to raise another issue, if a real issue. They're not going to even tell you. So it's very important कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड हों, और स्ट्रक्चर्ड हों और टाइम बाउंड हो, और इनकी प्रॉपर मतलब अवेयरनेस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हो. थैंक यू सो मच. तारा साहब, लास्ट उस पर हम आते हैं उस चीज में कि क्या इसकी ट्रेनिंग्स को ऐसी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कल्चरल इंटेलिजेंस हो गया, बिजनेस फ्रेमवर्क हो गया, नेटवर्किंग हो गया. इसलिए कि हम नेटवर्किंग, मैं बाहर जिस कल्चर में काम किया तो नेटवर्किंग हमारा एक एजेंडा होता था. हमारा मतलब हर क्वार्टरली हमें जो है वो नेटवर्किंग के तौर पे अपने जो क्लाइंट्स थे उनसे मिलना होता था, या हम किसी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, हमने जाके मिलना होता था. एक ट्रेनिंग कोर्स लाजमी था. क्या ऐसी कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जैसे मीटिंग्स भी होती हैं, कि जिससे जो इस चीज को डेवलप करे, जिस चीज को फर्दर स्ट्रेंथन करे, और इसकी इंपॉर्टेंस को बड़ा, जब चीज हो तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका. जी बिल्कुल. मैं आपको बताऊं कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो लर्निंग एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस होल प्रोसेस है. और मैं आपको बताऊं इसमें हमें कंसल्टेंट्स को यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे अली कह रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि हमें हेल्प लेनी चाहिए विद एक्सटर्नल ट्रेनर्स, विद एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस एरिया. देखिए जी, एवरीबडी कांट बी एक्सपर्ट फॉर एवरीथिंग. वी आर जनरलिस्ट ऑल टुगेदर. सो ये एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक्चुअली नॉट ओनली दैट
They have spent all their lives into understanding organizational behavior, organizational norms. What they do is वो psyche को भी समझते हैं. They go into behaviors of people. It's very very important जी कि हमें what we have to do is introduce a structured learning program for this purpose. और मैं आपको बताऊं इस साल what we have done कि हमने इस एरिया में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर आवर L1 एंड L2 दोनों के लिए we have initiated that and we are doing it with approximately a population of 50 people. So ये basically practically हम कर रहे हैं because अगर आज मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं लाऊंगा इस पूरे प्रोसेस में और एक न्यूट्रल बंदा आके कम्युनिकेट नहीं करेगा, it will be more like a biased kind of a thing where I am saying everything. So best practices के लिए मैं आपको बताऊं कि we should have very good trainers, consultants who should come from outside world and tell us about the best practices altogether, and we have a mutual learning process altogether. तो ये बड़ा important सवाल है आपको और ये हमें encourage करना चाहिए. थैंक यू सो मच अरशद आकिब साहब ने आज हमें एक्चुअली उन्होंने मॉडरेट करना था, वो बिजी थे, तो एक उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो, इन्हीं हवाले से है और उसमें पूरा, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है media@askdevelopment.org पे और उनको ये प्रेजेंटेशन भेज देंगे. इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह बने हुए हैं, तो कर सकते हैं. सर थैंक यू सो मच, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सेशन रहा. सर ऑडियंस के लिए वन लाइनर मैसेज, क्लोजिंग मैसेज आपकी तरफ से. Okay. So thank you very much. First of all, thank you to all the people who joined us. So the one thing which is very important is that do not take these conflicts lightly, because what will happen is that this will disrupt the future progress of the organization. So please address it and kill it when it comes. Do not linger. That's a small message. Thank you so much. Mohammed Ali Saab, sir. Ajay, I will second Tariq's perspective, and I will just add that please respect each other, respect each other's point of view, even if you are from different backgrounds. Try to listen what the other person is saying. और दूसरी चीज़ है जी trust. You need to build a culture of trust within your organization. This will really help you resolve so many conflicts. थैंक यू सर. और ट्रस्ट, नो डाउट सर, ट्रस्ट नहीं होगा. मैं एक चीज ऑडियंस आपको बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी ऐसे चले जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, एचआर प्रोवाइड करते हैं, तो वहां 2 केसेस हुए पिछले 6 महीने में जिसमें एक एम्प्लॉय ने दूसरे को मर्डर कर दिया. और मुझे ज्यादा उस चीज पे पता ये चला कि जब मुझे रिक्वेस्ट आई कि जी उस मर्डर केस को, इसलिए कि जो हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें एक नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ के 2 डिफरेंस होते हैं बेनिफिट. नॉर्मली जो नेचुरल डेथ है, अगर मिसाल के तौर पे 1 मिलियन क्लेम मिलना, तो एक्सीडेंटल में और 2 मिलियन हो जाएगा. तो इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज की जी मर्डर्स को हम एक्सीडेंटल डेथ में नहीं लेते. मैं कहा भाई क्यों? तो कहा कि ये इतना कॉमन होता जा रहा है इसलिए कि फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट है. और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन चीजों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कोई एड्रेस नहीं करता. कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हम अपने दिमाग में बनाए होते हैं और ये फैक्ट है. मूड स्विंग्स हैं, मर्दों में भी हैं, खवातीन में भी हैं. आप देख रहे हो तो वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कितने झगड़े होते हैं. सबने जवानी गए वो गुजारा है कि वो उसने इस तरह देखा, कॉलेज में झगड़े हो जाते थे, चीजें सॉल्व हो जाती थी. बट जो इस वक्त जो इकोनॉमिक इश्यू है और जो फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड रिजल्ट कभी कभी बहुत भयानक भी हो सकता है. एड्रेस करें, जैसे अभी तारिक साहब ने कहा, मोहम्मद साहब ने भी कहा कि इश्यू है, उसको सुने, उसको एड्रेस करें, एस्केलेट करें, उस पर डिसीजन लें, मीटिंग लें. क्लैरिटी होनी चाहिए कि सब फेयरनेस सबको नजर आए. इस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप हेल्थ बढ़ाएंगे, सेफ्टी बढ़ाएंगे, जो इवेंचुअली रिजल्ट होगी उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग की. प्रोडक्टिविटी एनीवन जो भी होगा, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी, आपका एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बेहतर हो जाएगा. अच्छे तरह काम करेंगे, एम्प्लॉय रिटेंशन आपकी बेहतर हो जाएगी. और थैंक यू सो मच सर. तारिक साहब, मोहम्मद अली साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर. ऑडियंस आप लोग का बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए. इंशाल्लाह 51st वेबिनार के साथ अगले महीने फिर हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Thank you. Thank you. Allah Hafiz ji. Allah.